twice, not once but twice, ये देखने के लिए कोई खबर मिस तो नहीं हो गई, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो बच्चों को बतानी चाहिए मुझे और वो शायद मिस हो जाए. So 3 newspapers in the morning, the Indian Express, the Hindu, and the Times of India every day, and I love bringing this program to you. So yeah, Jai Hind, thank you. Aa jao fatafat. Good to see you all. I think we are live. Jai Hind. Namaste. Good morning. Yeah, Diksha, Vivek. Good morning. Aa jao Devanand, Kailash, Pardesi. Jai Hind. So all set? All set? Are we live? Morning. Yeah, Diksha, Vivek. Good morning. Yeah, we are live. Devanand, Kailash, Pardesi. Let me switch off this. Yeah, okay. So friends, it's always a pleasure in the morning. Always a pleasure in the morning to see you all. And last May we will also have an AMA session. Today is Saturday. No, today is Friday. Today is Saturday. Today is Saturday. So we will have, and then evening, night again, I will have an AMA session with the YMA students. That is those who have BOCC, BOAC. आज शाम को again will have a riveting session. ठीक है, काफी कुछ मुझे बताने के लिए है और आपके क्वेश्चंस के. And we have had some amazing selections. ये भी बता दूं, we have had some amazing selections in last couple of days. We have 2 students selected. उससे पिछले हफ्ते we had 5 selected. So BOAC is crossing 45. So hopefully very soon we will cross the magical figure of 50 selections from BOAC and BOCC courses. चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी with the Indian Express. With the Indian Express. Oh, good to see you, Aarti, Arpit. Good to see you all. Sukrit, Deepak Sani, Aditya Aryan, Gaurang, Dashastra, Subed. Yeah, you all are my favorite students. अभी बात करते हैं, ठीक है, तुम लोगों से. Good to see you all. तो ये है Indian Express. This is Indian Express, and why I am showing is such a lovely picture to see India paramedics. These are army people. The field hospital that has gone. The field hospital that has gone is wearing the maroon beret. So these are people who are part of the airborne or para brigade, or people who have medical people, doctors, nursing assistants, and other staff, but who have done jumps. Only then you can wear the maroon beret. ठीक है, तो जो mandatory minimum 5 jumps कर लेते हैं, then you get the maroon beret, and then wherever you may be EME, signals, ASC, AMC, कहीं पे भी हो, then you continue to wear the maroon beret. So I see you saw the lady officer also yesterday, another picture with a girl. She was also wearing the maroon beret. तो बहुत अच्छी बात है. ये हमारे AMC के हैं. This is our Army Medical Corps. They are in Turkey and Syria helping the needy people. इसकी मैंने आपसे बात की. This is Operation दोस्त. दोस्त is a word, बहुत common word है. ये ईरान, अफगानिस्तान, टर्की, हर जगह दोस्त का मतलब होता है फ्रेंड. दोस्त का मतलब होता है फ्रेंड. So Operation दोस्त that is ongoing with Indian assistance to help people from this devastating earthquake, where the figure has crossed 23,000 dead. 23,000 dead, and still we have no news of many of the survivors. Anyway, so that is as far as the picture here is concerned. Operation Dost. We'll start with this Adani Heidelberg row. So the case has gone to Supreme Court. So Supreme Court heard it yesterday, and they say need to protect investors, step up regulation. So they've given time till Monday. They say we are not passing any judgment. We are only giving an advisory that what steps has SEBI taken, Security and Exchange Board of India, जिसका काम है oversight करना. Security and Exchange Board of India. It has been in news for many other things in the past, but this case has also brought the limelight back on institutions which are constitutionally mandated to do their job. So Chief Justice led bench proposes panel to government, SEBI no witch hunt, thinking aloud. So it says there should be no witch hunt, think aloud,
and find ways and means so that investors' money can be protected. Because markets work on sentiments. If Supreme Court passes a judgment which is not palatable, sentiments can bring it down. Or if they ignore it, it can take it up. So they say we are not passing any judgment. So it's a carefully calibrated response, calling the people who are supposed to safeguard the investors' money. So that is this. And continuing with this, in the front page, this issue is not going to die so soon. Global index MSCI pairs weightage of 4 Adani firms in indices. So this, when it happens, this global index is MSCI, Morgan Stanley Capital International, is owned by a US banking group, Morgan Stanley. Morgan Stanley, Moody's, these are huge groups which monitor the markets around the world. And based on their recommendations and their ratings, foreign institutional investors invest. वो invest करते हैं इनके कहने पे. तो इनकी इतनी credibility है. तो MSCI, that is Morgan Stanley Capital International, has reduced its weightage for 4 Adani groups in its various widely tracked indices, including emerging markets, India and Asia. So they have said 4 of their companies, they have reduced their, they reduced their weightage. So their shares have further gone down. And these are 4 important groups. Adani Enterprise is a flagship company. Adani Total Gas. This is Total, which is a very big gas company, oil company, and Adani. And then, of course, Adani Transmission and Ambuja Cement Limited, ACC, which was just acquired by Adani Group few months back. Also, at the same time, this Moody has also reflected negatively on its rating. So these 2 things coming together has further brought crisis to the group. Anyway, so that was the economic news and what is happening. Now we come to 2 very interesting news. This is first time Indo-US exercise include response to nuclear and biological terror attacks. So, and this is not a military to military exercise. This is an exercise between National Security Guard, RNSG, and the US Special Forces, SOF, Special Operations Forces of US. Special Operations Forces of US. While we do exercise with the US Army, US Air Force, US Navy, this is between the National Security Guard, NSG, and the SOF, which is underway, the exercise underway in Chennai. The exercise underway in Chennai. And here you can see in the picture, they are shown wearing the masks which are used when there is a biological or chemical attack. So for the first time, this is taking place, and this is the 6th edition of the exercise. इसका मतलब 5 exercise हो चुके, 6th edition of exercise Tarkash. The name of exercise is Tarkash, which is taking place in Chennai. So this is in backdrop of Russian allegations that chemical weapons have been used, and Ukrainians are blaming the Russians. So we don't know for sure. So that is interesting. Then you have a report from UK. UK counter-terror policy review warns against anti-India rhetoric on Kashmir. So the counter-terror policy review that has taken place in UK में जो हुआ है, उसमें they have flagged 2 issues which are concerned to India. Number 1, this groups which belong to Pakistan and other people who are settled there is too much of anti-India rhetoric related to Kashmir. So usko they have told the UK government to watch out. And second is, many of the Khalistani separatists, they are also up in arms, or they also create a lot of problems there. So these 2 issues which are potentially toxic, they have called them UK Muslims who are pro-Pakistan and targeting India on Kashmir, and our own people who are pro-Khalistani extremists who are in UK. And same is the problem in Canada also and Australia also. So this Khalistan lobby दोबारा से बहुत एक्टिव है, कुछ इंडिया में है, but here we have a tab on it, but these are people who are abroad, who have stayed, वो पैदा भी वहीं हुए, even then. So ये आपको विचार करने की बात है, ठीक है.
तो इस पे कुछ होगा तो आगे भी मैं कवर करता रहूंगा ये, ठीक है। चलो गिव मी अ थम्स अप अगर आपको ये मजा आ रहा है सेशन में। इससे मुझे पता लगता है बच्चे जाग रहे हैं, सो तो नहीं गए क्लास, जो स्पेशल क्लास में हमारा होता था। हाँ, आई एम मिसिंग talking to you all there. Then there is a nice article here at the bottom of this page, and this is by Nirja Chaudhary, who comments on political issues. So she says, so long, Central Hall of the Parliament, once a space for forging consensus, now shrinking. So once it was a place where consensus was forged, where irrespective of which part of the house do you sit, treasury benches or opposition benches, you build consensus, and you had debates, healthy debates. There was humor, there was laughter, there were criticism, but after that you brought consensus, and that space is shrinking. She has covered last 10 Lok Sabha elections. So Nirja Chaudhary has written on this issue. पढ़ लेना, पढ़ने का इंटरेस्ट हो, otherwise कोई बात नहीं. Now we move straight to the another interesting news. कल हमने कवर किया था SSLV D2 places 3 small satellites in orbit. Again an amazing achievement by ISRO. Okay, and this is by the this is called a small satellite launch vehicle, SSLV. We have PSLV and this is SSLV D2. Successfully placed 3 satellites in 450 kilometer circular orbit around Earth. So 450 किलोमीटर ऊपर अर्थ के सर्कुलर ऑर्बिट में है. They have been placed there. So the vehicle joined ISRO's fleet of 3 rockets. The workhorse PSLV, जिसकी मैंने बात की थी, its heavier cryogenic engine GSLV, and heaviest launcher LVM3, which is being human rated for गंगायान मिशन. तो ये चीजें नोट करने वाली हैं जो नोट्स बनाते हैं. ये चीजें कि हमारे कौन से 3 मेजर SSLV, PSLV and GSLV, and LVM3 which is being prepared for human when first Indians land on the moon. ठीक है, गंगायान जिसकी तैयारी चल रही है, जिसका मैंने बताया था नेवी के साथ इसरो इज टेस्टिंग द स्प्लैश डाउन ऑफ द क्रू. व्हेन द क्रू की कैप्सूल आएगी, आपने देखा होगा कई पिक्चर्स आती हैं, एंड थ्रू ऑन दे इजेक्ट and the spaceship falls into the sea, but the crew ejects from in a parachute and splashes down in open seas, and from there boats are ready, वो उनको उठा के ले आते हैं. ठीक है, तो ये है. So this is leap in space program explained. ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेस प्रोग्राम. इस पे लेक्चरेट भी आता है, इस पे ग्रुप डिस्कशन में भी हो जाता है, एंड अदरवाइज ऑल्सो इट्स इंटरेस्टिंग. अकॉर्डिंग टू इसरो, SSLV is capable of launching mini, micro and nano satellites. तो 3 टाइप की छोटी सैटेलाइट्स हैं, मिनी, माइक्रो एंड नैनो. सो इन 10 to 500 kg सेगमेंट. सो 10 किलो से 500 किलो के बीच. देखो कितनी इंफॉर्मेशन. रॉकेट्स बताएं आपको कितने टाइप के होते हैं, और ये मिनी, माइक्रो एंड नैनो 10 kg to 500 kg सैटेलाइट्स, केजीज का इनटू 500 किलोमीटर प्लानर ऑर्बिट. तो 500 किलोमीटर ऊपर तक इनको हम छोड़ सकते हैं थ्रू दिस. So these are launch on demand basis. It provides low cost access to space, offers low turnaround time, flexibility in accommodating multiple satellites, demand minimal launch, and so this is on demand. So this is a छोटा रॉकेट ऑन डिमांड. 2-3 सैटेलाइट ने बोला यार हमारी छोड़ दो, हमारी, अच्छा ठीक है, पुल इन किया, बोला भाई ठीक है, इस दिन तैयार है, हम छोड़ देंगे. So that is amazing, and it is from the Satish Dhawan Space Station in Sriharikota. I have been there twice. It's really a proud moment to go and see these facilities. बहुत अच्छा लगता है कि देश ने कितनी तरक्की करी है, especially in this particular sphere of space exploration. Now we come to the editorial page. I always say बहुत अच्छा होता है इनका editorial page, Indian Express का. ठीक है, because the paper is nice, the printing is good, and there's a lot of space. अगर आपने नोट्स बनाने हैं, अंडरलाइन करना है, जो कि करना चाहिए आप लोगों को. ठीक है, तो आज है दिस इज अबाउट
2-3 important issues. What a tangled web. There's again Pratap Bhanu Mehta, who was with the Ashoka University and now is a regular contributor to Indian Express. So this is about the collegium system. Again, the collegium system. This defies to go away. Defies to go away because new angles are being added. पहले था when the executive was attacking the collegium system, फिर उन्होंने बोला हमारा rep होना चाहिए उसके selection में. अब आ गया है related to two judges where he's talking of appointment of Justice Gauri and non-elevation of Saurabh Kripal to Supreme Court. So this is his views. Then we have this is on the editorial on takeoff point. This is on the ISRO's launch of new rocket by ISRO opens up new possibilities. Space Research Agency's stewardship will be critical. So it has opened new. So even startups, universities can launch their satellites through this, and because our launch by Antariksh, which is the foreign arm of ISRO, is one of the cheapest in the world. So instead of going to France or USA or somewhere else, a lot of foreign countries and institutions come to India for launch. So badi achhi baat hai. So they are saying that this this is a takeoff point for ISRO and we must progress. This is a really sad one. I didn't want to read it. फिर मैंने कहा चलो पढ़ लेते हैं. Girl in Gurgaon. These are in the informal sector. Informal sector में exploitation of labor. Larger issue था. Incident हुआ है. A girl from Jharkhand was mistreated by a couple, severely, brutally tortured for 6 months, and she's been, now taken to hospital. And this brings up कि poor people, poor children from Jharkhand, Madhya Pradesh, Bihar, West Bengal, Assam, they come to work in our metropolis. And how do we treat them, the educated? कि educated को क्या problem? Husband, wife both working, and the girl was eating out of dustbins. तो ये larger issue है. Abuse of domestic servants, abuse of they are in the informal sector. इनका कोई PF नहीं है. There are placement agencies who take commission on them. They take every month money from them. So this is an exploitation of human, and to do it with a fellow Indian, and that to do it with a girl is very sad. So labor laws में and इस type के issues के अंदर जो है ना ये कई बार discuss होता है ये issue. And I have a wonderful quote for you, which I want you to read. But ever since I was kid, I was always the winner. ये मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ. ये है लेब्रॉन जेम्स, जिसने NBA का रिकॉर्ड तोड़ दिया. हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट, 38,000 समथिंग बास्केट्स points he has scored in his basketball career. But the important चीज क्या of being a champion? So he says, but ever since I was a kid, I was always the winner. तो प्लीज ये विनर मेंटालिटी कल्टिवेट करो आप लोग. ये है, कई बच्चे हैं मैं देखता हूँ. ये अच्छा महक भी आ गई सामने. महक है, ठीक है. ये सुमेध है, आरती है. इन बच्चों में एक अर्पित है. इन बच्चों में है राहुल है. इन बच्चों में वो मेंटालिटी है. ये पॉजिटिव है. सो थिंकिंग लाइक अ चैंपियन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी से सोचो यार मैं तो चैंपियन. देखी जाएगी. SSB हो गया, अच्छी बात है. नहीं तो कुछ और करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अपनी पूरी लाइफ चेंज करेंगे. सो इट इज इन योर हैंड्स. सो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कोट. सो अगर अच्छा लगा हो तो गिव अ थम्स अप. बच्चा पार्टी, गिव अ थम्स अप. now the ideas page is very interesting today. Because we have articles from people with different extremes of the political spectrum. We have an article on Pakistan by Ram Madhav, who is Board of Governors, India Foundation, and RSS. We have Varun Gandhi. He's written a book, Feroz Varun Gandhi. He's written a book on our cities, metropolis. Uspe he's saying the starved city, ki how cities can generate funds. So he's written, and this is by Brinda Karat, who is with the CPIM. She's written about Chhattisgarh's area of darkness, anti-conversion campaigns spread terror in the name of protecting Adivasi culture. So 3 articles from 3 different political, thought process or ideologies, and discussing with 3 different subjects.
सो ये मजा है अखबार पढ़ने का कि आपको सब लोगों की बातें पढ़ने के लिए मिल जाएंगी और सबके व्यूज में से कुछ कुछ आप ले सकते हो. दैट विल हेल्प यू फॉर्म एन ओपिनियन, इन्फॉर्म्ड ओपिनियन. नाउ नाउ वी कम टू द वर्ल्ड. यहाँ पे आप देखो क्रूशियल 1.1 billion IMF deal eludes Pakistan for now talks on. So what we were given to understand हमें था कि कुछ दिन पहले जो है स्टाफ लेवल पे IMF पाकिस्तान की डील वर्कआउट हो रही है, बट अभी भी डील साइन नहीं हुई है. दिस इज 1.1 बिलियन IMF रोल आउट बिकॉज पाकिस्तान इज इन डायर स्टेट्स. पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं, आटा मिल नहीं रहा है. इवन आटा विच इज मतलब हमारे नॉर्थ इंडिया में सर्वाइवल है रोटी, तो वो भी बहुत महंगा हो गया. एंड पाकिस्तान रूपी हैज बीन स्लाइडिंग एवर सिंस. देन यू हैव Ukraine's power grid hit as Russia steps up offensive. Russia has been attacking power grids, gas stations and things like that so that लोगों की suffering बढ़े and they fight against their own government or things. So this is the war is on and there is no let up. At the same time, there's a Bofors gun which is now offloading to be taking part from Lithuania to take part in the war. And tanks are going to enter the war and let's see fighters come. Then, of course, rescue operations in Syria and Turkey. So more than 100 hours have gone of the earthquake, and I don't know what is going to happen. Yeah, मैं देखा था पेज आज इन्होंने पीछे ले गए. Explained page is out behind the editorial. Today they have some rejig has taken place. Here there are very good two articles. ठीक है, पहले बात करूंगा ये आपकी लिथियम की. कल मैं आई वॉज टॉकिंग टू BOAC 15 स्टूडेंट्स एंड वन ऑफ देम आस्क्ड मी अबाउट दिस. सर अब लिथियम फाइंड मिल गई है, अब तो मजे हो जाएंगे, अब तो वी विल नॉट बी इंपोर्टिंग. सो आई सेड नो, जस्ट फाइंडिंग दैट देयर आर दिस काइंड ऑफ दिस थिंग इज इन्फर्ड. इट इन्फरेंस है बेस्ड ऑन बेसिक स्टडी. अभी कुछ निकला नहीं है वहां से. When a project study is done and we see what is the kind of deposits, what kind of infrastructure, क्या लगेगा उसको निकालने में, will it be economically viable or not, तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ ये फाइंड मिली है. सो दिस इज वेरी नाइस. बड़ा अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया लिथियम इन्फर्ड इन J&K, हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस फाइंड, व्हाट नेक्स्ट. बट ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में कि लिथियम फाइंड कहाँ मिली है, तो पता होना चाहिए आपको. कहाँ है? रियासी डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, रियासी कहाँ है ये पता होना चाहिए. रियासी कहाँ है? जम्मू कश्मीर का मैप पता होना चाहिए आपको कि जब जम्मू में होते हैं हम, और एक तो रोड जा रहा है सीधा जवाहर टनल से, वो तो कश्मीर है, क्लियर, पीर पंजाल रेंजेस है. देन दिस साइड देयर इज अ रोड गोइंग फ्रॉम जम्मू टू सुंदरबनी टू नौशेरा टू रजौरी टू पुंछ. ये हो गया. तो इन दोनों के बीच में है रियासी का इलाका, जो कि इफ यू गो टू वैष्णो देवी एंड यू लुक डाउन टुवर्ड्स दैट साइड, दैट इज द रियासी एरिया. तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, नक्शा जरूर देखना चाहिए आपको. तो ये रियासी एरिया में मिला है, और ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है कि इट हैज बीन इन्फर्ड को इन्वर्टेड कॉमर्स में है 5.9 मिलियन टन्स इन सलाल हाइमाना एरिया ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. These resources have been established as part of Riyasi, Sersandu, Kherikot, Rohatkot, Darabi mineral block, where prospecting has been going on since 2021. तो 2 साल से वहां पे रिसर्च चल रहा है. अभी गांव वालों को पता लगा, बहुत खुश है बिकॉज ऐसी फाइंड मिल जाए कि ऑयल मिल गया नीचे, मिनरल मिल गया नीचे. बिकॉज लिथियम वी आर इम्पोर्टिंग, we don't produce, and it's mostly coming from China. So lithium is used in all batteries. उसके बिना ना आपके लैपटॉप चलते हैं, ना आपके स्मार्टफोन चलते हैं, ना स्मार्ट घड़ी चलती है, ना ही कारें चलेंगी, ना टॉर्च चलती हैं. सो लिथियम, सो दिस इज 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. एंड जो है इसके बारे में धीरे धीरे इसको वी हैव टू कीप वॉचिंग ऑन दिस न्यूज. आया ना मजा है सुबह मॉर्निंग न्यूज का. नाउ दिस इज ऑन द इंडिया कनाडा रीसेट. तो मैंने यूके की बात की थी, फ्रंट पेज पे जो यूके का रिव्यू हुआ है सिक्योरिटी रिव्यूज की. अब बात कर रहा हूं इंडिया कनाडा रीसेट. रीसेट क्यों हो रहा है?
क्योंकि आपको पता है इंडिया कनाडा रिलेशनशिप में थोड़ा सा फ्रीजिंग है बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ सम ऑफ द सो कॉल्ड इंडियंस इन कनाडा, especially Khalistani groups. And last time when the Prime Minister came, the visit was he was given a very cold response. So now their Foreign Minister Jolly has come quietly. Quietly means quiet visit, not quietly. She's come by here. So Jolly has come, Mrs. Jolly, and here's our External Affairs Minister Jaishankar. They have had wide-ranging talk before the G20 meet. G20 में आएगा कनाडा, तो उससे पहले इसमें कुछ इश्यूज हैं where we see that is especially Indo-Pacific. Canada wants Canada and India see eye to eye. Anti-China, Canada is also part of the anti-China, so they use very blunt language with China, Canadians. तो इसलिए setting aside our differences on other issues, there is a lot of scope for India and Canada to work together. So उसके बाद the big issue for India, वो ठीक है, इंडो पैसिफिक में हम कनाडा के साथ कोऑपरेट करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, वो सब सही है, लेकिन बिग इशू फॉर इंडिया is the safe haven that Canada has been giving for Khalistani groups, and what New Delhi sees is the Liberal Party pandering to these groups for votes. तो जो लिबरल पार्टी है, कुछ बहुत से खालिस्तानी सिंपथाइजर उनकी गवर्नमेंट में, उनके नाम भी दिए हुए. सो ये नहीं हो सकता कि आपकी रूलिंग गवर्नमेंट में आप एंटी इंडिया लोगों को रखो और एंटी इंडिया हेट एंकरेज करो. तो इस पे जो है, सो ट्रूडोज विजिट टू इंडिया इन 2017 वाज अ डिप्लोमेटिक डिजास्टर over the Khalistan issue. Last year, Delhi objected to Canada permitting a Khalistani secessionist referendum in the Sikh diaspora and hit back with the advisory against travel to Canada that warned against hate crimes. तो उन्होंने वहां रेफरेंडम करा दिया, हमने कहा नो ट्रैवल टू कनाडा. So that and what we must tell Canada. मैं अभी कुछ पहुंचे हुए लोगों की कंपनी में था कुछ दिन तक. So many of them were Sikh officers. They said इनको खालिस्तान बनाना है, इनको कनाडा दे दे जमीन, वहां बना ले पहले. के लिए खालिस्तान कनाडा में अलाउ कर दो, एक यूके में वहां अलाउ कर दो, एक ऑस्ट्रेलिया में अलाउ कर दो, पहले उनको चलने दो. These guys are absolutely they have gone off their mind. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है. तो ये इंडिया कैनॉट अलाउ दिस मूवमेंट टू टेक प्लेस अगेन. ठीक है. देन बहुत इंटरेस्टिंग है, आज तो इंडियन एक्सप्रेस में इतनी देर लग गई है ना. चलो, आर्टिकल 105 लिमिट्स टू फ्री स्पीच इन पार्लियामेंट एट व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड. सो दिस इज ऑन दिस, ये भी टॉपिक अभी एक्सपेंशन पे. पहले बहुत ही किसी ने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज कर दी, कोई कस वर्ड यूज कर दिया तो वो एक्सपंज होता था. बट नाउ the last couple of debates, large portions of opposition leaders' speeches are being expunged. उसके ऊपर है आर्टिकल 105 कि what is free speech in parliament and what is the Supreme Court पे भी ऐसे केसेस पहले गए उसके बारे में. तो एक्सपेंशन वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, उसको देख लेना हाउ टू यूज इट. आया मजा बच्चा पार्टी? हाँ, आया ना मजा? तो हम डिस्कस कर रहे हैं. चलो, नाउ वी मूव टू other papers take easier time because एक में एक काफी न्यूज डिटेल में मैंने कवर कर दिया. आज तो बहुत कवर किया डिटेल में आप लोगों से. ओके, क्वेश्चन लूंगा थोड़ी देर में बच्चा पार्टी, क्वेश्चन लूंगा थोड़ी देर में आप लोगों से. ठीक है. ओके, नाउ वी कम टू द हिंदू. हियर अगेन दिस इज पिक्चर ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर चंद्रचूड़. सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर ओपन टॉक्स विद सेबी ओवर अडानी स्टॉक. तो वही बात है जो मैं पहले कवर कर चुका हूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. एंड वी स्ट्रेट मूव टू द एडिटोरियल स्पेस. ये in this I just want you to focus on this article by Mr. M.K. Narayanan. He was the NSA and he was the former director of IB, Intelligence Bureau. So when he writes, ऐसे लोग कभी कभी लिखते हैं, इनको पेपर वाले रिक्वेस्ट करते हैं, सर आप कुछ लिखोगे. They are not regular writers. So he says India's law and order matrix needs a reboot. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अभी एक एनुअल मीटिंग हुई थी, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी, DGPs, IGPs ऑफ ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरीज दिल्ली में थे. तो उसके बारे में इन्होंने कमेंट किया कि इस फोरम में इतनी चीजें आपने डिस्कस करी हैं
but we haven't we have not been able to get the sense of it. So he says, with the evolving security scenario resulting in complex challenges, the nature of the security discourse as well as ground techniques have to be improved. So he says, पहले जो है सिर्फ IBs की इंटेलिजेंस हेड्स की मीटिंग होती थी क्वाइटली, but now it has become, this annual meeting has become a huge event, and a lot of papers are presented, and the schedule is very, very tight. So he says we need a new matrix and a reboot to think कि इंडिया की सिक्योरिटी इश्यूज क्या है, उनको कैसे टैकल करना है. Then is Nagaland elections, then is pension issues. Yeah, this is a very touching human story, the battle against child marriage. And you're aware कितनी इसके ऊपर गवर्नमेंट प्रोपोगेट करती है कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए. लॉज हैं 18 ईयर से पहले गर्ल कांट मैरी, बट इन सर्टन कम्युनिटीज इन इंडिया, garb of religion कह लो, कुछ कह लो, the girls are married immediately after puberty, and so there's been a huge crackdown in Assam on this. Thousands of people have been arrested, and this has brought out this human story ki why not educate them? Why not do this campaign, sustained campaign against child marriage? Reach out to the families, reach out to the schools, ensure girls don't leave school, and they're back in school. So many of the girls, they get married, वो थोड़ा सा पढ़ती हैं, शादी कर देते हैं. If they stay in school, they'll be more aware. So the paper, the article says that Rahul Karmakar says that while it's a much needed drive, we need to do this drive against child marriage. So, but it could have been execution could have been better with a plan in place, ensuring girls under 18 years are not considered a burden for the poor. अब क्या होगा? Girls under 18, poor people, वो same Gurgaon wali story, that girl who came from Jharkhand and tortured, this thing. 16, 17 years, either they are married or because they're a burden, they are pushed into the labor market, and this is an informal sector where they get exploited. Very sad. While society को strong message needs to go. Strong message needs to go to the society, to the parents, कि भी आप नहीं कर सकते अपने बच्ची की शादी 18 साल से पहले. ठीक है. Then we have this nice story from Gulmarg, where winter games are taking place, and Gulmarg is wonderful in any time of the year. तो Gulmarg में winter games हो रहे हैं, third winter games, and who knows, अभी तक we used to have only 1% taking part in Olympics, winter Olympics में, इंडिया का फ्लैग लेके. So who knows if we encourage winter tourism, because हमारे गुलमर्ग के इलाके में and even Himachal, we have beautiful snow, alpine snow, ridges where winter games की practice हो सकती है. So we may have an ice hockey team, or we may have some Indians also taking part in these events. And quietly in the corner is this foreign secretary, Mr. Quatra, has made a visit to Nepal. He's going, in fact, 13th, 14th. This is the first formal engagement with the government of Nepal after the new Prime Minister, Mr. Pushp Kamal Dahal Prachanda, came to power. Abhi tak he has not gone abroad anywhere. So, will he visit India first or will he visit China first? Hopefully, he should visit India first. So, उनकी visit को तैयारी करने के लिए, and to discuss, talk to the new government, his counterpart, our foreign secretary will be there for 2 days. And this is neighborhood first. So, ये क्योंकि नेपाल को मैं कवर करता रहता हूँ आप लोगों के लिए, आप अपने रीजन को नहीं छोड़ सकते. Anything that is happening in Pakistan, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka is of immediate concern to India. तो आपको बाहर का ना पता हो, इजराइल का बोल दो सर, I don't know, कोई बात नहीं, but you ought to know what is happening in your neighborhood. Lithium पे again, to cut down import needs, when it happens, this will be a good thing if we can, get our own lithium and not import. This is, of course, Russian attack across Ukraine with missiles and drones hitting their power stations, and China-US spar over Congress resolution condemning the balloon. तो ये भी मैं cover कर चुका हूँ. Tension between US and China on shooting down of the balloon.
ठीक है, rest is all sports news. The little story of this bowler from Australia, Murphy. He called up his father. कि dad मेरा selection हो गया. I'm going to play first test match in Nagpur. And his father just packed whatever he had, how he managed visa, and from Australia landed in Nagpur to be just in time to see his son make a debut in the match. And what a boy, 5 wickets in the first innings he has taken. So, Chashme wala, Murphy. So he was initially a batsman and a medium pace bowler and became a spinner only some time back. तो बहुत अच्छी ऐसी स्टोरीज में पढ़ने में मजा आता है. तो his father has flown all the way from Australia to see his son make a debut and कहता this jet lag is worth it. Anyway, okay. So Times of India first 4 pages are only full page ad. पहले 4 page. Then we start the paper. So this is of course quickly I'll finish then I'll take your questions. Pakistan crucial $1 billion IMF deal eludes. Talks continue. Rescue here. This is of course very well covered. How can investors be shielded from Adani type volatility? Supreme Court ने पूछा है. Ask center to get back by Monday. Adani stocks fall and adverse news from MSCI and Moody. MSCI मैंने बताया Morgan Stanley Capital and Moody is a rating agency. ये किसी की rating down कर दो उसका समझ लो. Then 5.9 ton find in JNK make India 7th largest resource of lithium in the world. Good news all over. अभी आपके क्वेश्चन लेता हूं, don't worry. Okay, I think we can end it here. और मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूं जिसके. चलो. हाँ, बच्चा पार्टी वेरी हेक्टिक है ना. चलो let me take your questions from top. क्या होता है ये जो मैरिज पे पूछा है, some of you have asked me this question. The debate is between our main laws, that is freedom of equality, and to other is freedom of propagating your religion and religious thought process. उसके बीच में कई बार conflict हो जाता है. Whereas the constitution says 18, but if certain religious books say कि नहीं you can marry your daughter at puberty, तो वहां जाके conflict होता है. I'm sure it is being examined and you'll have a judgment in favor which benefits the girls finally. ठीक है. हाँ, इस देश में the constitution should be supreme over everything else. चलो, तो मैं जरा ऊपर से ले लूं. गुड मॉर्निंग, जय हिंद के बाद नाम बाद में लूंगा. कुछ लोग कहते हैं मेरा नाम ले लिया. सुमेध है, नरसिंह पहलवान है, सुमित नेगी, इंडियन आर्मी, चंदन सरदार, प्रवीण, अभिजीत माने, वर्तानो, महक गौर, दीक्षा, अमन, चंदन, सीडीएस आले बालक. अच्छा, वो प्रिंस गॉड, YMU, रुबीन, प्रवीण, विवेक गुरुंग, आयुष, सानू, अजय, आदित्य, ऑल इन वन, वेदांतु. विराट त्यागी इज बिकमिंग रेगुलर और इंटरेस्ट ले रहा है. मुझे इंस्टाग्राम पे भी भेज रहा है, सर ये सेंटेंस ठीक है, WAT के. सुकृति झा, रोमांटिक लाइफ, सर अकेडमी आपने भी छोड़ दी. यस, लुक्स लाइक बताऊंगा. Yesterday in newspaper because of this issue seat was shifted. Yes, Mehak is back in the classes. सर एक बात कहनी थी आपने. सुकृति झा, SSLV D1 was not able to put the satellite, but I think SSLV 2 ने कर दिया ना कल. All 3 satellites have been put in place. सुकृति झा, कॉलेजियम सिस्टम नहीं पता, बहुत लेट है, पता करो पहले, गूगल सर्च करो, पढ़ो. जय शिव, सर मुझे तो आर्मी ही ज्वाइन करना है, CDS या FCAT या TA PIB. गेमर राज, ठीक है गेमर, ज्वाइन करना है तो करोगे, तैयारी करोगे तो करोगे.
ई पेपर में आप नोट कट वो नहीं कर सकते हो, बट आप वहां से इंपॉर्टेंट उसको हाईलाइट करके नोट्स बना सकते हो अपनी। मेरी वीडियो देखो, हाउ टू मेक नोट्स ऑन करंट अफेयर्स। मेरी वीडियो देखो, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, हाउ टू यूज मैप्स। ये 3-4 वीडियो और टूल किट फॉर एन ऑफिसर, ये तो तुम्हें हर महीने एक बार देख लेनी चाहिए। पाकिस्तान रुपी इज 3.38 ऑफ इंडियन रुपी। Russia lost information warfare. I don't know they lost or no. Mehak, sir, I have a doubt as in today's newspaper also it was mentioned that by Ukraine that they destroyed 61 out of 70 on Russian, but why Russia never? See, Mehak, लड़ाई में ना वॉर, लड़ाई में इंफॉर्मेशन वॉर चलता रहता है, इंफॉर्मेशन वॉर। यूक्रेन विल पब्लिश हमने इतने टैंक उड़ा दिए, इतने एयरक्राफ्ट, इतने बंदे मार दिए। रशिया विल से इसका तो 10% भी नहीं लॉस हुआ। So nobody wants to tell its own people what is the actual situation. Which watch I'm wearing? This is Fossil. This is Fossil. Gifted to me by my son. नहीं तो मैं तो फिटबिट पहनता था हमेशा, मेरे को घड़ी का शौक नहीं। So दीक्षा मैंने बताया ना मैरिजेबल एज का, the law says 18 years, but as per Islamic practice, they say any girl who's attained puberty can be married. But child marriage सब इस्लाम में नहीं होती। चाइल्ड मैरिजेस और रिलीजन्स में भी होती है इंडिया में। आप राजस्थान में देखो, तीज के टाइम कितनी चाइल्ड मैरिजेस होती हैं। सो दिस इज अ फिनोमेना, इट इज पॉवर्टी रिलेटेड। इन ये इशू मेरे को लगता है गरीबी से रिलेटेड। इफ यू आर वेल टू डू, इफ योर गर्ल कैन गो टू कॉलेज, विच पेरेंट विल मैरी द गर्ल एट दिस एज? कोई नहीं करेगा। यू सी, डू यू सी वेल टू डू पीपल गेटिंग देयर चिल्ड्रन मैरिड एट यंग एज? नहीं, ये गरीबी का इशू है। एंड रिलीजन उसके ऊपर से एक जामा पहना देता है, रिलीजन उसको एक सैंक्टिटी दे देता है। देखो कैलाश ने बिल्कुल सही लिखा है, पॉपुलेशन भी रिलीजन का इससे का ज्यादा मतलब जो है आपका गरीबी से रिलेटेड है। यूसीसी पे मैंने बहुत जबरदस्त क्लास ली थी, वो जो बच्चों ने अटेंड करी है या देख लेना, शायद अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे होगी। मैं Sir, how you learn English speaking in your time? Pradeep Pathani, I learned by reading books. I learned by reading books and speaking with people. और कोई तरीका नहीं था। तुम्हारी तरह तुम तो लकी हो, आज वी हैव BOCC कोर्स, कम्युनिकेशन कोर्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्योंकि मुझे नीड फेल्ट हुई इसकी कि ऐसा कोई कोर्स कराना चाहिए बच्चों को, कम्युनिकेशन कोर्स। तो हमारे टाइम पे था नहीं, हमने तो धक्के खा के सीख ली किसी तरीके से। एनडीए के रिटर्न पेपर के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना यूजफुल? सिर्फ नहीं, यूजफुल है, बट सिलेबस भी देखना पड़ेगा आपको। सिर्फ प्रीवियस ईयर से शायद ना बने बात। पहले सिलेबस के गो थ्रू द एंटायर सिलेबस, अच्छे से पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करो, फिर जाओ प्रीवियस PYQs में। प्रेमवदा महाजन, थैंक यू प्रिंस गॉड। नहीं, अभी स्पेशल क्लासेस बंद है। एंड नीरज वरांगे, गुड मॉर्निंग। साहस 1 alumni, या साहस से वी गॉट, नीमा हैज गॉट रिकमेंडेड। साहस में नीमा था, नीमा हैज गॉट रिकमेंडेड NDA 150। BOCC will continue. Next course will start in March first week. BOAC starting on 20th February. BOAC SSB guidance program 20 तारीख से। How to get more knowledge? Stay with more. Yashmor. Yes, यशपाल भाटी, ये कम्युनिकेशन कोर्स डिजाइन ही ऐसे है कि आपको SSB में जाके बिल्कुल बिंदास स्टाइल से आप अपीयर कर सकते हो, बिंदास स्टाइल से, बेबाक स्टाइल से। BOCC will start very soon. 99 percentile in JEE is to make any advantage in SSB? No, no, no. वहां है परफॉर्मेंस।
अगर बोल ही नहीं पाओगे, अगर इंग्लिश कमजोर है, लिख नहीं पाओगे, तो क्या करेंगे आपके जेई परसेंटाइल का? So this is the problem with our, we can't write properly, we can't speak properly, we don't have any knowledge of current. उनको ऑफिसर चाहिए यार, उनको ऑफिसर चाहिए, trainable, who can be trained to become an officer. जोधपुर राजस्थान, गुड रजत सिंह. यशपाल भाटी, join the BOCC course. ममता फोर्ड, read any book, ममता, read any book, कुछ भी पढ़ लो जो आपको हाथ लगता है, स्टोरी बुक्स, कॉमिक्स, कुछ पढ़ो, पढ़ना शुरू करो. हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इज टू हैव अ रूटीन एंड डिसिप्लिन लाइफ. ये बहुत जरूरी है, रूटीन एंड डिसिप्लिन, बस. सीडीएस आले बालक, आपने आईडी ऐसी बनाई हुई है, हम आपका नाम नहीं जानते हैं. मैं हमेशा कहता हूँ यार, अपने नाम से बनाओ, अपना नाम जो माँ बाप ने दिया है. सर, माई ग्रैंडफादर वॉज इन ऑर्डिनेंस कोर, माई फादर इज इन सिग्नल कोर, आई विल ऑल्सो ज्वाइन इंडियन आर्मी. बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, जरूर ज्वाइन करो. Truly said, sir, it seems like lithium will be the new oil as we are getting heavily dependent on electronic gadgets, mobile phones, laptop, automobiles, etc. Very nice, Abhi. Diksha Chaudhary, then you can join the BOCC course. वहां आपको आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे, एवरी डे क्लासेस होंगी और लाइफ चेंज हो जाएगी. ये मैं बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन कोर्स. सर, यूसीसी क्लास में रिवर्स ओपिनियन हो गया था. कोई रिवर्स ओपिनियन? हाँ, ओपिनियन हमने रिवर्स किया था. करेक्ट विराट, यू आर वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. स्पेशल फोर्सेस में 1 माइल की बेस्ट टाइम कितनी चाहिए? अरे तुम स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करो, पहले फौज में आओ, ठीक है? ये फितूर छोड़ दो स्पेशल फोर्सेस का, पहले फौज में आओ, ठीक है? पहले एनडीआई में क्लियर करो, फिर सोचना. एनसीसी ए सेट को हेल्प इन एनडीए में सब बराबर, बच्चे बराबर हैं. आप सोचे एसएसबी में आपकी परफॉर्मेंस है, अगर है तो ठीक है. ये नहीं कि इसकी बेस पे कोई ले लेगा आपको, नो. ये एनसीसी नहीं है तो रिजेक्ट हो जाओगे, नहीं, ऐसी बात नहीं. अमन कुमार प्रजापति, देन यू ज्वाइन द BOCC कोर्स इफ योर इंग्लिश इज वीक. BOCC इज अ कम्युनिकेशन कोर्स, 3 महीने का कोर्स है. बेसिक ऑफिसर्स कम्युनिकेशन कोर्स 3 months and personality development. BOAC is 2 to 3 weeks. It is SSB guidance program, psychologist, GTO, interview, पूरा SSB oriented है. भूपेंद्र यादव, sir, I'm veteran of BOCC. Welcome. welcome. These are jumps. Aman Pinto, para jumps. Para jumps anyone can do. EME, signals, AMC सबको अलाउड होता है जो वॉलंटियर करते हैं, बिकॉज पैरा ब्रिगेड में when the paras drop, they also have to have medical, EME, signals, mechanized infantry, सब होते हैं. So they all jump. So AMC में भी लोग होते हैं जो जंप करते हैं. My real name is Dipanshu. Okay, ठीक है दीपांशु, इतना सुंदर नाम है, डिलीट करो सब. Sir, how much time do you read? I take about 1.5 to 2 hours in the morning before the class to mark the paper. Vladimir Putin, ज्वाइन करो फिर इंग्लिश कोर्स, BOCC कोर्स ज्वाइन करो, ठीक है? तभी बात बनेगी. सो बच्चा पार्टी, मजा आया? प्लीज लाइक द सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड. बेचारे अंधकार में डूबे. मैं अभी गया था बच्चों, मैंने कहा तुम सुबह का अखबार का सुनते हो? सर हमें पता ही नहीं. मैं क्यों नहीं पता है? सो पता करो. सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर इंटरेस्टेड इन एनडीए, सीडीएस, एफकैट तैयारी कर रहे हैं यार. मॉर्निंग में सर रोज न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं. बाद में देख लो, बहुत से बच्चे तो रात को देखते हैं. बहुत से बच्चे मेरी क्लास के रात को देखते हैं, जब टाइम मिलता है दोपहर को देखते हैं रिकॉर्डिंग. देखो भूपेंद्र ने क्या बोला, इज रियली वेरी बेनिफिशियल टू ज्वाइन BOCC. I request others also to join it and look for new phase of life. Thank you, Bhupender. मेजर साहब, अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हो तो आप तो जरूर BOCC कोर्स करो, तभी आइडिया होगा कि SSB पास हो, बिकॉज SSB हिंदी में नहीं हो सकती. हिंदी में नहीं हो सकती SSB.
तो ये टेलीग्राम का चैनल मैं शेयर कर रहा हूँ, लिंक टेलीग्राम का, उससे आप जो है ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन आपको कोर्सेज की मिलती रहती है, ठीक है। ठीक है, चलो, सो आई एम शेयरिंग द टेलीग्राम लिंक। तो ये टेलीग्राम पे चैनल है, एंड यू कैन ज्वाइन दिस एंड गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। चलो, मजा आया, मजा आया ना। लॉन्ग सेशन टुडे बिकॉज आज बहुत कुछ कवर करने का था, और कल है संडे, मैं जाऊंगा सुबह साइकिलिंग के लिए, और उसके बाद करेंगे सेम सेशन फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट टू यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल, स्टे फिट, स्टे मोटिवेटेड एवरी डे, स्टे फिट, स्टे मोटिवेटेड, ठीक है। टेट टॉक का भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। दीक्षा तुम पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहते तुम पढ़ो, अच्छी बात है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।